न्याय को एक मंदिर बताते हुए तमाम अधिवक्ताओं को उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। This is a court building, which all of us call न्यायालय, क्योंकि यहाँ न्याय होता है और क्योंकि यह न्याय होता है इसीलिए हम इसको टेम्पल ऑफ जस्टिस बोलते हैं, न्याय का मंदिर। हम मंदिर में जब जाते हैं तो बड़े पवित्र मन से जाते हैं। वहाँ भगवान के सामने झूठ नहीं बोलते, सच्चाई को सामने लाते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तो अगर इसे हम टेम्पल ऑफ जस्टिस, इफ वी ट्रीट इट एज टेम्पल ऑफ जस्टिस, then perhaps our behavior will also have to be just like a person who goes to a temple. And in a temple there is no occasion, there is no meaning of having any kind of cheating. You can't cheat God. And you must not cheat God. This court building by itself is not a court of justice. If you put a judicial officer here as the presiding officer of a court, it will not become a court of justice. If we bring litigants before the judge, that will also not constitute the court of justice. In order to constitute the court of justice, there must be presence of lawyers. Unless the law itself excludes presence of advocate. Meaning thereby that in the system of administration of justice, lawyers play an exceedingly important role. ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पहले लॉ मिनिस्टर नरेंद्र नारायण यादव ने राज्य सरकार द्वारा न्यायिक क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। बिहार राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों के लिए न्यायालय तथा आवासीय भवन के निर्माण की प्रक्रिया लगभग बिहार के सभी जिलों में चल रही है। उसी क्रम में कटिहार में 10 कोर्ट भवन एवं 8 न्यायिक पदाधिकारी का आवासीय भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत आज हम सभी यहाँ नवनिर्मित भवन के उद्घाटन हेतु सम्मिलित हुए। साथ ही साथ अतिरिक्त परिवार न्यायालय का भी उद्घाटन होने जा रहा है, जिससे परिवारवाद के निष्पादन में तेजी आएगी। अंत में बारी थी उनकी, जिनको सुनने के लिए उपस्थित लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, चीफ जस्टिस मिस रेखा की। चीफ जस्टिस ने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में स्वागत गीत गाने वाले छात्र छात्राओं को धन्यवाद दिया। जस्टिस अंसारी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, जस्टिस मिहिर कुमार झा, जस्टिस DK सिंह, members of the bar, ladies and gentlemen. Before I say anything, I will first thank these young boys and girls from the school for their rendition of Swagat Geet. उसके बाद माननीय मिस रेखा ने अपने संबोधन के दौरान सभी अधिवक्ताओं को निष्पक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के निर्वहन करने की सलाह दी। I have noticed that you have a very fine civil court building here. When the district Katihar became a judicial district, the district court was established on 26th May 1986. Then Honorable Chief Justice Mr. Sandwalia came here to inaugurate it. And maybe thereafter I am the first Chief Justice who has visited this court. I must say I have no heart to congratulate you for one more court, Court of Additional Principal Judge Family Court. More court means that there are more disputes in the society. Every civilized society needs a well-defined legal system
but it must be for real issues, not for every turn and every nook and corner. There must be litigations coming to the court, maybe frivolous. The building, the infrastructure are the means to the justice, and they are not the end. The end product comes only with the help of the lawyers and with the hard work of judges. How many of you lawyers have ever tried to see to it that whatever cases you have filed are put an end to expeditiously? How many lawyers give proper time to the litigant to understand the real issue, put it in a legal terminology, what we call pleadings, and file before the court? After filing, how much effort is made to see to it that the matters are conducted on the dates fixed? How many of you come prepared on the dates fixed? Today I have 5 cases and I have to attend to all the 5 cases. I believe if there were enough assistance from the bar in the terms of not asking for adjournment, we would not need more and more buildings for courthouses. साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं को पैसे के पीछे भागने की आदत से बचने का भी मशवरा दिया। There is one more thing a lawyer is responsible for, is to see to it that his juniors are well settled in life. When I say well settled in life, I don't mean that they are making money or earning well. Everybody comes here for earning. Everybody look forward to good earning. But he is well versed with the laws. He is well trained. He has the exposure, and he ultimately grows up as a well-established, well-honored, good lawyer. Is it not the duty of senior lawyers to see to it that they train at least half a dozen good lawyers over their entire career of 40 years or 50 years? How many of us are that sincere that we see to it that our juniors who are working with us, who are rendering assistance, who are working up matters with us, are ultimately they grow up as good lawyers? समारोह के अंत में फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज श्री झा ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। Mr. B.N. Pandey, the district and sessions judge, my esteemed colleagues of judicial fraternity, the respected president, Bar Association, and the learned members of the bar, our most valued invited guests, ladies and gentlemen. It's my proud privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of the Katihar Judgeship and the entire socio-legal fraternity assembled here, extend a very hearty vote of thanks to all the speakers for their gracious presence today. A big thank you to your leadership, Honorable Ms. Justice Rekha Manharlal Doshit, for her illuminating words, especially on responsibility of lawyers. We really feel blessed for her presence and her encouraging words. Thank you, your leadership. We are all inspired by your great words. We are very thankful to the Honorable Law Minister Sri Narendra Narayan Yadav for his kind words and taking time out of his busy schedule to grace the occasion by his presence. We express our heartfelt thanks to your Lordships, Honorable Mr. Justice I.A.N. Sari, Honorable Mr. Justice Ajay Kumar Tripathi, and Honorable Mr. Justice Mihir Kumar Jha for their august presence and for their erudite speeches. We, the humble members of legal fraternity, express our deep gratitude for their wise counsel and invaluable information. This has strengthened our faith and confidence in the system.
This will remain a beacon light throughout our life and one of our cherished possessions to fall back upon. We are very grateful to your lordships for their encouraging words. संबोधन कार्यक्रम के बाद शुरू हुआ लोकार्पण का सिलसिला। सबसे पहले चीफ जस्टिस ने नवनिर्मित 10 कोर्ट बिल्डिंग का फीता काटकर उद्घाटन किया। गौरतलब है कि अब से इस बिल्डिंग में अदालतें अपना काम करेंगी। उसके बाद सुश्री रेखा ने न्याय की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ द गॉडेस ऑफ जस्टिस का पर्दा हटाकर अनावरण किया। बस छोड़ दो, पीले छोड़ दो। फिर बारी थी एडिशनल फैमिली कोर्ट भवन की। सुश्री रेखा ने इस भवन का भी पर्दा हटाकर उद्घाटन किया। फिर बारी थी नवनिर्मित खूबसूरत उद्यान की, जिसमें बड़े ही खूबसूरत फूल पौधे लगाए गए थे। साथ ही इस उद्यान में कुछ स्प्रिंकल मशीनें लगाई गई हैं जो पेड़ पौधों की सिंचाई करेगी। इस उद्यान का भी फीता काटकर लोकार्पण किया गया। पानी चलिए, पानी दूसरा कहाँ? पानी लाओ मिनिस्टर साहब। उद्यान के लोकार्पण के बाद उद्यान के बीचों बीच बने संविधान दर्शन स्तंभ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पर्दा हटाकर अनावरण किया गया। अंत में बारी थी जज रेसिडेंशियल भवन की। इस भवन में 8 फ्लैट बनाए गए हैं। चीफ जस्टिस मिस रेखा ने फीता काटकर इस भवन का भी लोकार्पण कर दिया। इसी के साथ संपन्न हुआ आज का यह महत्वपूर्ण सिलसिला। उसके बाद चीफ जस्टिस अपने सभी सहयोगियों के साथ विश्राम के लिए जिला अतिथि गृह की ओर रवाना हो गई। आज का दिन कटिहार के विकास के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।